Well, next up on the show, another student suicide, the 14th this year in Kota in Rajasthan, famous for student coaching centers, again brings to us the bizarre reality of pressure on students to perform, many of whom choose to end their own lives. This is a collective failure at so many levels. Parts of the country. Mehul Vaishnav and Aditya Seth, both 17 years old, studying for their NEET exams in Kota for the past 2 months, living in the same area but from different parts of the country. Mehul from Salumbar, a small town in Rajasthan, and Aditya from Jaunpur in Uttar Pradesh. But one factor in common: suicide, caused by stress, the inability to cope with the rigorous coaching for medical exams, and perhaps these two young boys were also unable to carry the burden of their parents' expectations. 17-year-old Aditya's father says his son never let his parents know he was under any kind of stress. डेली बात होता था। डिप्रेशन में था क्या? वो कुछ तनाव में था? तनाव में था क्या? पढ़ाई को लेके कुछ बताया हो कि कोटा में उसका नहीं, ऐसा है और कर रहा था, और मेहनत करेंगे और अच्छा जाएगा। उसका एक भाई इंजीनियर भी है, ठीक है, वो भी चाहता था कि हम भी तैयारी करके कुछ बन जाए। Whether the children communicated clearly or not, their parents' expectations and the desire to crack these competitive exams is what is driving these suicides. Since the beginning of this year, an alarming 14 students have died by suicide in Kota. In 222, it was 15 deaths, 3 in one day alone. In 2017, 10 students committed suicide in Kota. In 2018, 12. During 2019 and 20, in the middle of the pandemic, there were few students in Kota. In 2021, as coaching resumed, 9 students died by suicide. Experts say post-COVID, the suicide rate is increased by 60% in Kota. बालक जो था वो वैष्णव समाज के छात्रावास में रहकर नीट की तैयारी के लिए आया था करीब 2 महीने पहले। उसके बाद रात को भी एक सूचना मिली थी कि एक और बच्चा था जो विज्ञान नगर में सेक्टर 2 में एक पीजी में रहकर नीट की तैयारी कर रहा था। दोनों ही करीब 2 महीने पहले कोटा में आए थे। दोनों के हमने अलग अलग मर्ग दर्ज कर दिए हैं। घर पर छोड़कर बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कभी भी। This worrying trend of suicides has prompted the police to launch another helpline in the city, where police personnel go out in the field to interact with coaching students. But the sheer numbers, a floating population of over 2 lakh coaching students in the city, could mean this is a mere drop in the ocean. In Jaipur, Harsha Kumari Singh, NDTV. Well, joining us now, Shreyas Kushwaha is a NEET aspirant. Shreyas's parent, Suman Maurya, also joins us in a separate city, I might add. So you've got both the mother and the child over there. Dr. Sagar Srivastav is an educational counsellor. Dr. Jayanti Datta is a renowned clinical psychologist and a very special guest. Anand Kumar, the founder of Super 30, a Padma Shri winner, and somebody who's given so much hope to so many young people in this country through his schemes. Anandji, let me come to you first. Whose fault is it that we've got such high suicide rates among students looking to crack entrance exams? Whose fault is it? ये बोलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम जैसा समझते हैं कि माता पिता का भी, पेरेंट्स का भी काफी दबाव रहता है, प्रेशर रहता है बच्चों पर कि अच्छा करें। मोहल्ले में, समाज में देखकर उन पर दबाव बनाते हैं बच्चों पर, और अपनी आखिरी जमीन जो होती है उसको भी गिरवी रख देते हैं या बेच देते हैं और बच्चों को भेजते हैं। तो बच्चा बेचारा चला जाता है वहां, और फिर कोचिंग सेंटर्स वाले भी खाना पूर्ति के लिए एक टेस्ट ले लेते हैं। अब बच्चा में उस तरह की एबिलिटी है या दूसरा कुछ काम करने की एबिलिटी है, उससे मतलब नहीं। मेडिकल की तैयारी करनी है, आ जाओ। IIT की तैयारी करनी है, आ जाओ। बच्चा तो चला जाता है। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन के बाद उसको सफोकेशन महसूस होता है। बच्चा कहाँ जाए आखिर? कोचिंग सेंटर में कोई ऐसी काउंसलिंग की व्यवस्था नहीं है, सरकार के तरफ से कोई ऐसा सेंटर नहीं है जहां बच्चा अपना दर्द बचा सके। बच्चे आपस में कंपटीशन की भावना रखते हैं, तो उसके किसी को इतनी वक्त नहीं है, फुर्सत नहीं कि उसका ख्याल रख सके। बच्चा लाज लिहाज से अपने माता पिता, पेरेंट्स को भी नहीं बता पाता है कि उसके दर्द क्या है। अकेलापन महसूस करता है और धीरे धीरे लगता है कि अब वापस जाके मैं करूंगा क्या। और उसको कोई जब नहीं रास्ता दिखता है
तो ये अंतिम रास्ता वो अख्तियार कर लेता है। तो पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए। कंक्लूजन, सरकार को भी इस तरह के कोचिंग पर नियंत्रण रखना चाहिए और कोचिंग वालों को भी सोचना चाहिए कि ऐसे बच्चे जो क्लास से गायब होने लगे, मार्क्स कम आने लगा, उन पर थोड़ा ध्यान दे। क्यों ऐसा हो रहा है, बच्चा क्यों ये बताइए, आपके सुपर 30 स्कीम में जब आप इतने बच्चों के साथ काम कर चुके, उनको पढ़ा चुके, उनको ट्रेन कर चुके, उनको इनकरेज कर चुके, जब आप स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हैं अपने स्टूडेंट्स में? क्योंकि हम लोगों के जो ग्रुप होता है उसमें हमारे अलावे टीचर्स, हमारा भाई और हमारे परिवार के लोग सब बच्चों से 1-to-1 बात करते हैं। तो कोई बच्चा अगर क्लास में एब्सेंट होता है एक दिन तो ठीक है, दूसरे दिन तो हम लोग सीरियस हो जाते हैं। क्या उसकी तबीयत खराब है, बातें समझ में नहीं आ रही है, क्या कोई घर का प्रॉब्लम है या कोई और मानसिक प्रॉब्लम है, हम लोग तुरंत बच्चे से बातचीत करते हैं। बच्चा बोलता है सर मैथमेटिक्स नहीं समझ पा रहे हैं, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, देखिए ये चीजों को नहीं समझ, हम लोग बैठा के पढ़ाते हैं, समझाते हैं। तो जब तक आप बच्चों के कमजोरी पर, जहां वो बेचारा दबाव महसूस कर रहा है, उस पर आप काम नहीं करिएगा तो बच्चा तो असहाय, हेल्पलेस अपने आप को महसूस करेगा और ऐसा कदम उठाएगा। इसलिए बच्चों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। Dr. Jayanti Datta, is that perhaps the key issue? And it's just wonderful to hear Anand raise all of these points, that there is no system that looks into the emotional requirements of the child. There is no system that tries to understand, is the child understanding or not understanding? Is the child able to cope or not able to cope? Is that the issue? That is one of the issues, because you see, when you go to a new place and there is so much of pressure, there is no bonding. Emotionally, you are totally isolated and you feel, the pressure is not only from the academic front, but from the family front also. What will I say? Because these are the children, very often they come with a very last minute resort, they sell out everything, they arrange for the money and they said, no, the parents send the children as a last resort to this place. And the child has this burden also. How will I face my parents? How will I face the people in my, the extended family? So all these things put a lot of pressure and stress on the child. Now what Mr. Anand said, that's an ideal situation, where everybody is bonding with the child. Child doesn't feel isolated out. Now he can bond if he has a problem, and a component of a problematic thing, he can share. Now, otherwise, in these kind of institutions, you have no scope to share. Even if you try to tell and table that I'm having this problem, you will be belittled. You will not be helped. See what happened in near Delhi University very recently. We found that the children, these aspirants were kept in a very unhygienic situation. Now, these kind of quota, it's not new. It's been going on for last so many decades. We all know that these suicides been happening. Why government is not taking steps to find out and monitor that the center is having the onus, is having the responsibility to take care? Because when you push the children and you take so much money and you don't have any onus, you don't have any responsibility, I think it's high time we should take into cognizance this, and if the need be, close down, shut down these centers. Because you are not, I am handling students, those who have come through NIT but could not clear the medical. They are into nursing or they are into some other course and they still have that bitterness. See, I could not clear the medicine. I wanted to be a doctor. This is such a kind of a pressure, the child is groomed from the very beginning. You have to be a doctor. You have to be a doctor. I think it's high time we should orient the children also that this is not the only profession. You have so many other avenues you can choose and help the children. I think, a couple of years back, I did help Delhi government to open up the kind of, the sessions in all these schools, especially the government schools, where you will have career mela.
so that the child is oriented that these are the avenues. If you are not able to get the marks, you don't There's have always to... an option. That's the key point Yes, you're mentioning. yes, yes. You know, Dr. Datta, 1 second. I just wanted to bring up some statistics. Let's have that graphic on the 2021 National Crime Records Bureau report on suicides, because in as much as we are talking about Kota, it's actually much larger than that. At least 35 students end their life every day, according to the 2021 report. Over 13,000 students have died by suicide in 2021 alone. There was a 4.5% rise in students' deaths by suicide in 2021. Right? That's important because it was a COVID year compared to 2020. And Maharashtra has reported the highest student death by suicide. Dr. Sagar Srivastav, again, basic question, why is this happening? Very good evening, dignitaries. First of all, we need to understand कि ये हमारा ही बनाया हुआ, हमारा ही उपजा हुआ एक समस्या है. हमने विद्यार्थी जीवन में सेट्स का अध्ययन किया था हम सब ने, और सेट्स में यूनियन बी को ही हम समझ लेते हैं. सोसाइटी का जो निचोड़ है वो टीचरों ने संभाल लिया, टीचरों का जो निचोड़ है वो पेरेंट्स तक गया, और इसका आखिरी पायदान जो है वो स्टूडेंट. तो जो स्टूडेंट है वो इतना हड़बड़ाया और इतना हवाग्रस्त है कि उसके अंदर अवेयरनेस की कमी हो जा रही है. आप साइकोलॉजिकली और इसको समझेंगे तो एक इंसान अपने जान लेने की प्रतिविधि में तब लिपे हो जाता है जब उसके पास कुछ बचा नहीं होता है सोचने को. और हमने हॉलिस्टिकली कुछ विभागों को इतना ज्यादा सेलिब्रेट कर दिया है जिसमें बहुत कुछ अब बच नहीं रहा है बच्चों के लिए. और ये क्रम हम किसी सिर्फ यहीं पर नहीं देख रहे हैं. प्रोफेशन अपने आप में इतने न्यूनतम घेरा रख लिए हैं कि हमारे पेरेंट्स ने, हमारे टीचरों ने, हमारी सोसाइटी ने ये मान लिया है कि जीवन जीविका के लिए कुछ 4-5 जो क्रम में आ जाने वाले प्रोफेशन से वही है. और अवेयरनेस की भारी कमी होने की वजह से ये सारी एक तरीके ये एकदम सही कह रहे हैं. इनफैक्ट आनंद जी, मैं आपको यही सवाल पूछने वाला था कि हमारे देश में पॉलिसी अनुसार हम जॉब स्किलिंग पे काफी फोकस कर रहे हैं, पर हमारे थिंकिंग में जॉब स्किलिंग या स्किल डेवलपमेंट के कोई प्रोग्राम्स कोई बच्चे लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि 3 या 4 या 5 प्रोफेशंस ऐसे हैं जो सब बच्चे लेने चाहते हैं. पर स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है. दैट इज ऑल्सो एन एजुकेशन. Do you think there needs to be a change in mindset about accepting jobs based on skill training? हाँ, सही बताया आपने. दरअसल में हमारे देश में एक ऐसा माहौल बनाया गया कि आईआईटी, यूपीएससी, नीट, तो ये माहौल का तो बहुत अच्छा प्रभाव भी पड़ा, बुरा भी पड़ा. अब जो जिस लायक नहीं है, ये नहीं करे कोई बच्चा कम है. मान लीजिए कोई का स्किल है, राइटिंग स्किल. मैं एक ऐसे बच्चे को जानता हूं जो बहुत अच्छा मूर्ति बनाता था और पेंटिंग करता था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन उसके पिताजी हमारे पास ले आए रोते हुए कि इसको आईआईटीएन बना दीजिए. मैंने लाख समझाया फिर भी नहीं माना. अंत में बच्चा भागकर बीएचयू गया, वहां पढ़ाई पढ़ा और आज अच्छा पेंटिंग करता है. तो इस तरह से हम जबरदस्ती बच्चों पर बोझ डाल रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं. वो पेंटिंग किया, कार्टून बनाया, और आज एक कंपनी में लाखों रुपया महीना कमा रहा है कार्टून बनाकर एनिमेशन के लिए. तो कहने का मेरा मकसद है कि बच्चों को स्वतंत्र सोचने के लिए अवसर दे, उन पर अपने सपनों को मत थोपे, आसपास देखकर प्रभावित होकर उन पर दबाव मत बनाए. बहुत सारे फील्ड है हमारे देश में, पूरी दुनिया में, जिसमें कुछ अच्छा करके बच्चा बहुत कुछ अच्छा कर सकता है. इसलिए मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूं इस चैनल के माध्यम से कि सबसे पहली जिम्मेवारी आप पर है कि बच्चों पर दबाव न बने. जी, Shreyas, I wanted to come to you next. You're a NEET aspirant. Are you okay if the exams don't go well for you? Would you be happy to do something else? Yes, sir. Good evening. First of all, coming to the question, yeah, I will be completely alright. मतलब मेरे पेरेंट्स की तरफ से भी उनका कोई दबाव नहीं है, तो अगर पेपर नहीं भी जाता है तो मुझे सपोर्ट करते हैं. तो पेपर नहीं जाता है, अच्छा नहीं गया तो भी सपोर्ट है, अच्छा गया तो भी सपोर्ट है. उनका ये रहता है कि अच्छा गया है तो भी ज्यादा खुश ना हो, बेकार गया है तो ज्यादा डिमोटिवेटेड ना हो. एक नहीं होगा तो कुछ होगा. मेरे एक मामा थे, उनका भी, वो भी एक्चुअली नीट एस्पायरेंट थे, तो उनका भी नहीं निकला, लेकिन आज वो अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं. तो वो भी मुझे मोटिवेट करते रहते हैं कि कुछ नहीं, कुछ ना कुछ तो जीवन में हो ही जाएगा. जरूरी नहीं कि एक नीट का पेपर है वही आपके लिए सब कुछ है.
तो मेरे लिए तो ऑलराइट रहता है सब कुछ। और सुमन जी, आपने श्रेयस को कैसे इनकरेज किया? श्रेयस खुद कह रहे कि देखिए मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, मेरे पास कई ऑप्शन है, और अगर नीट का एंट्रेंस एग्जाम ना हो तो और कुछ हो जाएगा। आपने ये कैसे सोचा था डे वन से? एक्चुअली सर, नीट का वो था, लगन था, हम लोगों ने कोई दबाव नहीं डाला। जो हमारा शुरू से ही ये आता है, आप ऑलराइट, सॉरी, दबाव बनाते हैं, नहीं तुम नीट करो, या पेरेंट्स अपना दबाव बनाते हैं कि नहीं नीट करो, आईआईटी करो। ये बच्चे के अंदर जिस चीज की चाहत हो, आप अगर वो करवाते हैं तो वो ज्यादा बेस्ट करता है, बेटर करता है। तो हम शुरू से ही अपने बच्चों के अंदर, बच्चों को ये चाहते हैं कि वो, ये नहीं है कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने तभी वो कुछ कर सकता है। लाइफ में बहुत कुछ है भी करने के लिए। अगर आप अपना बेस्ट करेंगे तो आप जो भी करेंगे उसमें अच्छा जाएंगे। डॉक्टर दत्ता, you had a point to make. Go ahead. Yes. I want to say that you see in some of the government schools, you do have vocational courses introduced. But after the child is exposed to that, there is no scope, there is no job outside. So I think, it's high time, as you said, for the skill development. Along with the skill development, there should be a longitudinal planning. And when the children are groomed by these institutions for engineering, from medical, they should be given the alternate avenues also. They should be made aware that in case you are not able to do this, you can go to these sidelong professions. There are so many professions in the hospital setup. One can be anything. You could be a physiotherapist, you could be a clinical psychologist, you could be a nursing professional. So many avenues are there. The students I handle, some of them did say to me that, when I felt this is my last chance, I have not cleared the medical, I still wanted to work in the hospital setup. So I chose this particular career. So physiotherapy, occupational therapy, rehabilitation professionals, all these people, the children, unfortunately, those who are groomed specifically, know you have to crack medical only. They would do anything. And let me tell you one thing, suicides, they are not very well planned by these youngsters. They just happen. And anyone who commits suicide, it's a matter, we give crisis intervention, and believe me, it's a matter of few seconds, few minutes. If you can change, if you can support the child, if you can support the person, you see, even the professionals are committing suicide. It is very much about crisis intervention. It is about getting there in time to actually understand a child's needs and react sympathetically and appropriately. Look, it's been so important speaking to all of you, and I think the message of Anand Kumar is so very important, that different children have different skills, and it's important for teachers and parents to understand and identify those skills and take them to where their true potential lies. It's not just about NEET. It's not just about becoming a doctor or an engineer or a civil servant. There's a world out there. We'll take a short break. More coming up.